नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 6 अक्टूबर बृहस्पतिवार 2022 है। हम आज निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे कि आज गैप अप के बाद हम किस तरह ट्रेड कर सकते थे। आइडियल ट्रेड्स यानी कि जो ट्रेड कर सकते थे उनकी बात करने से कोई एक प्रैक्टिस होती है, एक अभ्यास होता है। तो धीरे धीरे अभ्यास से ही हमारी व्यापार की क्षमता भी सही होती है या बढ़ती जाती है, यानी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। उसी तरह से ये बात हम आज कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते थे। बाज़ार फिर आज गैप से खुला। ये बाज़ार का एक नियम हो गया है कि 3-4 दिनों से बड़े बड़े गैप से खुलता है, लेकिन हुआ क्या, 15 मिनट का हाई और लो देखिए आप। ये 15 मिनट का हाई और ये 15 मिनट का लो है। 20 मिनट बाद यानी कि 9:35 और 40 के बीच में ये लो टूट गया। ये सच है कि लो टूटने के तुरंत बाद ये भागा, वापस ऊपर गया। पहली बार टूटा, दूसरी बार टूटा, पर ये जब 15 मिनट का लो टूटा तो हमारे पास एक ये मैसेज आया कि शायद बाज़ार चौपी हो सकता है। अभी कोई मंदी की बात नहीं है, पर चौपी बाज़ार हो सकता है, तभी लो टूटा है। अगर चौपी बाज़ार है तो इस पे आज के व्यापार में कुछ मिलना नहीं है। लेकिन अगर हम इस गैप को भरने की दिशा में जाने वाले हैं तो फिर एक डाउन ट्रेंड पकड़ में आ सकता है। ये सुबह कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम मूविंग एवरेज को प्रयोग में लेते हैं ऐसे दिन के लिए कि चौपी है तो वो ऊपर नीचे कटने लगेगा, हम हट जाएंगे, बात बनेगी नहीं। एक ट्रेड लेना पड़ेगा, उसमें नुकसान लगेगा, फिर चुप बैठ जाएंगे। अगर चौपी नहीं है और कोई रुख मिलने वाला है तो मूविंग एवरेज उस रुख को पकड़ लेगा। इस समय स्वाभाविक है, बाजार चूँकि ऊपर गैप से खुला था, मूविंग एवरेजेस चल रहे हैं, कोई सिग्नल दे नहीं रहे हैं, लेकिन हाई को तोड़ने के पहले ही ये नीचे की तरफ घूम गए। अब हम लो के नीचे बेच सकते थे। इस लो के नीचे कुछ नहीं आया, यहाँ पर है ना लो टूट गया तो यहाँ पर हम सेलिंग करते, और उसके बाद ये मूविंग एवरेज यहाँ घूमा है। तो जब ये घूमा है, कटा है, तो हम हाई के ऊपर उस शॉर्ट को भी कवर करते और बाय इसलिए करते क्योंकि हो सकता है कि ये चौपी होने के बाद जो ये पिछला ट्रेंड है वो वापस आ जाए, तो बाइंग भी बनती थी। लेकिन मिला क्या? मिला कुछ नहीं। यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ लॉन्ग किया, कोई 10-15-20 पॉइंट मिल गए, जो मिल गए सो ठीक है, वो कोई बात नहीं है। पर ये शॉर्ट में कुछ कमाई हुई है, लेकिन क्योंकि हम है ना यहाँ शॉर्ट करके यहाँ कवर कर रहे हैं। अब हम यहाँ लॉन्ग हो गए। लॉन्ग होने के बाद ये मूविंग एवरेज यहाँ पर कटा है और लो नीचे टूटा तो हम यहाँ निकलेंगे। ये इसमें क्या मिला, यहाँ खरीदा था, यहाँ बेचा, लगभग वही 2-4-10 पॉइंट मिले हैं, कुछ नहीं मिला। पर यहाँ पर हमारी बिकवाली इसलिए बनती है कि बाजार आज 2 ट्रेंड दे चुका है। ये है ना चौपी नहीं है। चौपी मार्केट में मूविंग एवरेज बार बार कटते हैं, और पहले हमारे पास एक संदेश आ चुका है कि लो टूट गया था। ये अभी लो टूटा नहीं है वापस, पर मूविंग एवरेज सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। लो टूट गया है तो हम इस मूविंग एवरेज की सेलिंग को ले सकते थे। यहाँ पर सेलिंग होती और यहाँ कवर करते, जो कि अपने आप में सही ट्रेड था। ये देखिए आइडियल ट्रेड है, ये हमने किया नहीं है, लेकिन ऐसा कर सकते थे, और इसका अभ्यास करके हम अपने आप को और बेटर कर सकते हैं ट्रेडिंग में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट्स प्लीज़ देते रहिए। जय हिंद। Good evening. I am Sudarshan Sukhani and today is 6th October 2022 Thursday. Today we are going to discuss an ideal trade for today's Nifty movement, intraday price movement. This is a 5-minute candlestick chart. The ideal trade is a trade that could have been taken after looking at all the charts for the chart for the day. Obviously, it could not have been taken in real time because we cannot have the chart of the full day in the beginning of the trading session. But the idea of looking at ideal trades is to become practiced in this market movement. If this happens, then we could have done this. If we do this exercise repeatedly, when that happens, we will be ready because we have the practice to say, okay, I have done this kind of trading many times theoretically, and I know what I should do when these circumstances come about. So the ideal trades method are a very useful way of honing our technical trading skills. They make us better traders because they make us alert, they make us ready, they give us the sense that okay,
of patterns. This pattern would deserve this kind of attention. So let's look at the ideal trade for the Nifty. Understand, I have not taken this trade. This is only after the event. But as I told you, it's worth finding out what could have happened. Now the Nifty opened with a big gap. This became a usual feature for the last 3-4 days. After the big gap, the Nifty did something very interesting. This is the 15 minutes. This is the low of the first 15 minutes. And that is the high. And what did the Nifty do? It broke the low. And then after another 2 candles, it broke the low again. Now in an uptrending market, the low should hold. That's what the opening range breakout is about. So the fact that the low was broken gave us a message that maybe the Nifty is willing to close this gap for the day, only for the day. These lows breakdown have no large significance. But for all we know, this may simply be a trap and the market may go and move above the high again. So what is the best way of trading it? Moving averages. Because if there is a trend, the moving average will catch the trend. If the breaking of this low is going to result in a choppy market condition, we will see the moving average go up and down, up and down. That will tell us that this market is choppy and we don't want to trade it. Obviously, in that choppiness, we will probably lose one trade, lose in one trade. But at least beyond that, we don't have to trade. So we wait, the moving averages are riding up, we wait patiently and the moving averages cross. We want to sell below the low. This low did not have a selling idea. This low was broken, so we can go short here. The moving averages are falling, now they have converted, moved up again. So if they move up again, we want to buy above the high. This buying will close the short trade and take the new long trade. And the reason we are taking the new long trade is because the market may give us a trend in any direction today. Otherwise, usually we take only one trade. This breakdown of the opening range tells us that maybe we can get a trade on the downside also. What happened in this trade? Short here, cover here. Some minor profits were made. At least this line is sloping. So we go long here. And again the moving average crosses here. If it crosses here, we sell below the low of the bar and we sell here and go short. What did we make in this trade? Well, the line is sloping upward, so we did make some points, but maybe 5 or 10, maybe whatever. The third trade is a short trade here. This trade lasted from this point to this point, and clearly it was a winner. The reason why we chose moving averages was because of this opening range breakdown, which was the first message that maybe something is going on here today, which we don't understand, but which could lead to a trend or a choppy market. Thank you for watching this video. Please give your comments. Jai Hind.